perhaps something evolved in those private closed door discussions. A 25% tariff is massive. And it's also BRICS. They have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar. प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी. He is trying to kill the market of Indian economy. He's thinking, but it's not going to happen. ये मोदी जी का समर्थ नेतृत्व के कारण हम पूरा भरोसा में हैं कि अमेरिका का ये चाल नहीं प्रभावित कर सकता है हमारा इकोनॉमी को. डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पगला गए हैं. मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि वो कहीं से भी हमारे मित्र नहीं हैं. हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके सम्मान को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ाने का काम किया और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया. कल भी मैंने बोला था कि जो पेनल्टी लगा रहे हैं कि रशिया के साथ व्यापार मत करो, तो हर आदमी स्वतंत्र होता है अपना व्यापार करने के लिए. हर देश स्वतंत्र होता है. इस तरह कहना तुम इससे न करो, उससे न करो, मुझसे करो, मतलब कुछ दादागिरी ट्रंप ने मचा रखी है. Yeah, I mean, obviously, hearing the news was definitely shocking, but I also want to put it in context where I think that Trump has a history of threatening tariffs on Canada, Mexico, EU, and a few other countries, and then he sometimes backs out, or he might reduce that significantly in half. So I think that while this news is obviously shocking, and while if it is implemented, will have major repercussions, I want to also keep in mind that this could just be a global dominant power play. He's trying to kill the market of Indian economy. He's thinking, but it's not going to happen. The reason behind is we are exporters, especially the medical equipments, pharmaceuticals, and disposables are mostly coming from the India, because whatever the market of America is dependent upon the Indian and China. If he's trying to impose, if it is 100 rupees cost is there, which is exporting to the US, it is costing 125 rupees, with which the cost of the treatment in America is increasing, the cost of the treatment procedure is also getting delayed, and the import of America is also charging more, with which what usually happens in his country people are affected rather than India. Whereas India is not going to impact, because we are going to by route, we are going to export to the European countries, we can export to the African countries, but we are not completely dependent upon that. I think this is typical Trump trying to create as much pressure and chaos on a bilateral basis as possible, so that he can, in the end, claim victory by solving or at least ameliorating the problem which he's created. The basic difficulty is the abandonment by President Trump of the multilateral approach to international trade. आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है. कैसे चलाने देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है. टोटल कंफ्यूजन है. ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने. ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया. पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी. मतलब कौन सी सक्सेस हुई है?